Good morning, first of all. Good morning to everyone. Good morning to students who are attending class online. So, how are you all? Good, fine, great. So, we have one question. So, write down question, that is Myanmar's military coup. Tight rope, na? Or trope? Tight rope walk for India. It has to back democracy in Myanmar while ensuring this is the question. Write down the questions. And what should be the approach, or what we have to write the demand of the questions. So first of all, we need to understand the demand of the questions. दिख रहा है? Myanmar's military coup has brought a tightrope walk for India. Comma, it has to back democracy in Myanmar, means India has to back a democracy in Myanmar while ensuring its security and development interest. Discuss. She has asked a question, so I thought you should also. We have done Myanmar. So what should be the answer? What is the demand? First of all, we need to understand the demand of the questions. जी बताइए. India's interest in Myanmar. Basically the question, it wants to ask why Myanmar is important, why it wants to ensure its security and development interest, how it will. So we have seen that while it has been a military coup, but still India is supplying their militaries and defense equipments, participating. So here we need to understand why Myanmar is important. So Myanmar is important because it is a gateway to the Southeast Asia, to counter the China. Sitwe port, there is a port from the Kolkata to Sitwe. It is also a way to enter into the northeast region of India. Yes or no? Then there is a project, Mekong Ganga project. So discuss karna hai, right? So military coup has brought a tightrope. How it has brought a tightrope? Because now it has to deal with the military, where earlier it has a democracy, right? So India has to deal with that. India believes in a democratic nations.
जो पॉलिसी इंडिया की रही है, दैट इंडिया विल सपोर्ट्स अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन द नेबरिंग नेशंस. हाँ, एंड इट उसको वो हमें इसमें मेंशन करना कि हाउ along with this or despite this India is helping, India is making with the military, they are supplying the military defense. That's all we have written, right? So ये सब इसमें मेंशन करना है. ठीक है. So see, it's basically want to show this questions that asking that despite there is a military coup, why India is eager to secure its security, because of importance of Myanmar to Delhi. So for right, so introductions we will show that how Myanmar is important, why we need a relations, a good relations want to establish with the Myanmar. To right, so that will be slight introductions, not overall. How why Myanmar? Now you can also see that this coup, military coup, has done what effect to Myanmar, brought what effect to Myanmar. ठीक है. Now how it has impacted India relations. Then in the body we will show why it is important, why it is necessary, what India is doing with the along with that Myanmar does not have a democracy, still it is a military coup, right? Under military rule, still India is developing a relations with Myanmar, maintaining relations with Myanmar. ठीक है. Then we will come to the next, how India is helping Myanmar in democratic stabilizations. तो ये सब हम इसमें लिखेंगे. क्या रिलेशंस ट्रेड का, क्या अभी भी करंटली क्या ट्रेड तोड़ दिया इंडिया ने, नहीं. एंड व्हाट्स द रीजन नॉट बीइंग कट ऑफ फ्रॉम द ट्रेड, कि हम आपसे करेंगे ही नहीं. क्या रिकॉग्निशंस दे दी है, दिस ऑल थिंग्स. रोहिंग्या क्राइसिस को हम यहाँ पर बेसिकली ये मिलिट्री कूप से रिलेटेड है. इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि व्हाट इज द चैलेंजेस बिटवीन दीज टू, हाउ मिलिट्री कूप हैज अफेक्टेड इंपैक्टेड इंडियाज रिलेशंस, बिकॉज इंडियाज थ्योरी इज टू बिलीव इन अ डेमोक्रेसी एंड इंडिया ऑलवेज स्टैंड फॉर द डेमोक्रेटिक मूवमेंट इन द नेशंस. आप याद कीजिए नाम में भी, द पॉलिसी ऑफ द नाम इज दैट इंडिया विल ऑलवेज सपोर्ट अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट लेड बाय द पीपल ऑफ दैट विदाउट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल मैटर. So that we have to write basically. Problem is not because of military coup. It was existed earlier also. Are you getting my point? ठीक है. So we can write discuss. It means you need to discuss, and discussion should be there. What are implications, पॉजिटिव implications, नेगेटिव implications. हम जब डिस्कस करते हैं तो दोनों पक्ष रखते हैं ना डिस्कशन में, कि ये भी है उसमें, ये भी फ्लॉज है, तो दैट्स, बट नॉट गोइंग मोर इनटू द नेगेटिव पर्सपेक्टिव. इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट जापान, सॉरी, लैंड ऑफ राइजिंग. निप्पॉन सुना आपने? निप्पॉन, NIPPON है ना. निप्पॉन बैटरी आती थी, अभी भी आती है ना. क्या निप्पॉन नाम क्यों है उसका? बिकॉज ऑफ जापान. रोशनी सबसे पहले यहीं पर क्या होता है, सनराइज. सो निप्पॉन का मतलब ही राइजिंग, सन राइजिंग. ठीक है. तो लैंड ऑफ राइजिंग भी कह सकते हैं हम. So India and Japan. ठीक है. So this is Japan in the ocean, Indo-Pacific regions में ये जापान है आपका. And India and Japan is, it's not a new relation. सबसे पहले तो हमें समझ, it's an ancient
relations which has been established accordingly with the Buddhism, related to the Buddhism. India and Japan spread and related with Buddhism from the 6th century BC. ठीक है, जब स्प्रेड होने लगा तो लोग जापान भी मूव किए टू स्प्रेड द बुद्धिज्म. क्लियर? So if we see in the terms of ancient, so India and Japan relations goes back to 6th century BC and which is related to Buddhism. ठीक है. And after independence the relations between India and Japan was solidified, or agreement was done in 1952. And as we all know that Japan is also a participant of World War. वर्ल्ड वॉर में जापान पार्टिसिपेंट था. जापान ने हमें हेल्प किया. नेताजी सुभाष चंद्र बोस अटैक टू जापान इन दिस मणिपुर एरियाज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. यस और नो? आज़ाद हिंद फौज अंडमान एंट्री, तभी ब्रिटिश परेशान हो गए, जापान घुसने वाली थी तो इन्होंने कह दिया ठीक है, जस्ट गो विद द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड ऑल दिस टू काउंटर जापान. Are you getting my point? And Japan was in the this aspirations to capture China. हमने ये सब डिस्कस किया था when we have discussed all these things. So this is we can say starting of a relations in 1952, a modern development relations. हाँ, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पे ही. ठीक है. And this is, and in the modern era, modern society, after independence, the peace and friendship treaty was signed between India and Japan in 1952. Is it clear? And Japan is a peace loving nation. उन्हें अपने constitutions में Japan is also part of Quad. ठीक है. क्लियर? चलिए, सो राइट डाउन. और थोड़ा सा ना स्पीड बढ़ाइए लिखने का. एंड देयर विल बी अ चांसेस दैट टुमारो विल हैव अ लॉन्ग सेशन. हाँ, और किसके? चलिए देखिए, India and Japan signed a peace treaty and established a diplomatic relations in 1952. India and signed a peace treaty and established a diplomatic relations in 1952. Next point. In 2006, the India-Japan relations was elevated. In 2006, the India-Japan relation was elevated to global and strategic partnership. Global and strategic partnership. Next. In 2014, bilateral relations between India and Japan, the bilateral relations between India and Japan was upgraded to special strategic and global partnership. Was upgraded to special strategic and global partnership.
Next point. Japan and India vision of 2025 for special strategic and global partnership. Japan and India vision 2025. Special strategic and global partnership working towards spatial strategic and global partnership working towards for the peace and prosperity of the Indo-Pacific region and the world. Indo-Pacific region and world. वो जो स्ट्रैटेजिक ग्लोबल और पार्टनरशिप है ना, आपने जो लिखा है दैट इज इन 2014 इट इज बीन एस्टैब्लिश, तो उनका विजन 2025 तक क्या है, टू एस्टैब्लिश अ पीस. नाउ वी आर डीलिंग विद नाउ इन द इंडो पैसिफिक रीजन. कल हमने देखा था ना इंडो पैसिफिक रीजन, राइट? सो दिस जापान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन. ठीक है. In 2023, India and Japan confirmed their commitment. In 2023, India and Japan confirmed their commitment to develop Japan-India relations. Confirm their commitment to develop Japan-India relations and work closely towards the realization of inverted comma में लिखेगा, write down in the inverted comma, free and open Indo-Pacific. It's clear? Next point. India and Japan established 2+2 diplomacy in 2008. Diplomacy, 2+2 diplomacy is clear ना? Defense minister and foreign affair ministers of both the nation will meet on every year. ठीक है, तो ये 2+2 diplomacy हमने US में भी देखा था. with the US is also been established, right? So 2+2 diplomacy established in 2008 and under this annual defense meeting will be there, right? आप देखिए कि नहीं, out I am saying कि it will annually day every year it will, right? Malabar में भी exercise में Japan is a part, yes or no? India, Japan, US, Australia are part of Malabar exercise. हमने we have done and that is will culminated in the Quad भी उन्हीं चारों लोगों का है military exercise. Is it clear? Next point.
दिस ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, कहीं ना कहीं हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. जस्ट वी आर रिकलेक्टिंग दिस फैक्ट्स व्हेन वी आर कंसर्न विद द टॉपिक. मालाबार भी हमने यूएस के साथ में कर ही लिया था. ठीक है, चलिए राइट डाउन. इन 2020 द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान in 2020 the agreement between India and Japan concerning 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 reciprocal provision of reciprocal provision. रेसिप्रोकल समझते हैं ना? हाँ, रेसिप्रोकेट, उन्होंने कुछ किया तो आप भी कुछ करें. दिस इज रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल प्रोविजंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज. Supplies and services between the self-defense forces of Japan, self-defense forces of Japan and the Indian Army forces. Right? Inverted comma में लिखिए ACSA. ACSA. This agreement is known as ACSA. Full form लिखिए in the bracket. Acquisition and Cross Service Agreement. Acquisition and Cross Service Agreement. Acquisition and Cross Service Agreement. Clear? So this was signed in 2020, right? And write down inverted comma, bracket is closed, write down and came into force in 2021. Came into force in 2021. ठीक है, चलिए. नाउ राइट डाउन एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड जापान. हेडिंग agreement between India and Japan. First point, exchange of notes on Japan International Cooperation Agency. Exchange of notes, NOTES, notes. Exchange of notes on Japan International Cooperation Agency, CA. Japan International Cooperation Agency. लोन नहीं, कंटिन्यू कीजिए. JICA लोन of 300 billion Japanese yen. 300 YEN. 300 billion Japanese yen on Mumbai Ahmedabad high speed railway. On Mumbai Ahmedabad high speed railway project. Mumbai Ahmedabad high speed railway project. Clear? ठीक है. Write down the next point under this agreement. Civil nuclear cooperations
that exchange of notes between these two, I mean Japan JICA for this project of 300 billion Japanese yen. नहीं वो नोट्स नहीं, हाँ मीन्स कि वो हेल्प करेगी जापान जो है वो, जापान देखिए इंडिया को हेल्प कर रहा है स्मार्ट सिटी बनाने में भी, दिल्ली मेट्रो में भी जापान ने हेल्प किया है। इनिशियली व्हेन दिल्ली मेट्रो वाज स्टार्टेड इन 1998 और 1997, लास्ट ऑफ दिस centuries, so it was been established with the help of Japanese technology. ठीक है, so and Japan is also helping India in its project of smart city, development of smart city. ये 2014-15 की बात है, ठीक है। So Japan is very much keen to, so Japan is providing loan to this Mumbai Ahmedabad high speed railway stations, railway line which has been developed between these two. ठीक है, लिखिए नेक्स्ट। इंटरनेट कम लगता है, इंटरेस्ट किसमें? वो तो एग्रीमेंट साइन के ऊपर है, इंटरनेशनल बाइलेटरल लो इंटरेस्ट तो होगा ही, बट क्या परसेंट चार्ज है, क्या है, किस बेसिस पर है? मीन्स ऑफ एन एग्रीमेंट, they made an agreement to invest itna in this project. नोट का मतलब वो करेंसी वाले नोट की नहीं है, एग्रीमेंट किया दोनों ने, एक नोट्स एक्सचेंज कर लिया कि भाई हम आपको हेल्प करेंगे विद दिस बिलियन ऑफ जापानीज येन, एंड इट इज अ लोन, तो इट हैज टू बी लोन, तो हमेशा इंटरेस्ट पे ही आएगा, इंटरेस्ट फ्री तो होगा नहीं, राइट? आप कितना परसेंट पे इंटरेस्ट दे रहा है दैट इज नॉट आवर कंसर्न, और अभी इतना माइन्यूट डिटेल में हमें जाना भी नहीं है, वो तब आप जाएंगे जब आप फिर मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड डेवलपमेंट में चले जाएं या फिर उस सेक्रेटरी लेवल तक, फिर आप पूरा चीजें तो देखेंगे। राइट नाउ जस्ट दे आर डूइंग दिस, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशंस। हाँ, under this agreement we are writing, write down corporations, civil nuclear corporations. Why we are doing civil nuclear corporations, not defense nuclear corporation? क्योंकि न्यूक्लियर का यूज हम इसलिए ले रहे हैं, उनसे डील किया कि हम उसको सिविल यूज में करेंगे, पावर जनरेशन में करेंगे, हम डिफेंस परमाणु बम बनाने में यूज नहीं करेंगे। हाँ नहीं, डिफेंस हम यूरेनियम जो ले रहे हैं आपसे या न्यूक्लियर एनर्जी जो ले रहे हैं उसको हम सिविल मैटर में, लाइक जनरेशन, पावर जनरेशन, ग्रीन, ये सब में हम यूज करेंगे, उसका हम यूज, उनको हम यूज नहीं कर सकते किसमें? डिफेंस में हम यूज नहीं कर सकते इन फॉर्मिंग ऑफ दिस, राइट? तो डिफरेंस क्या हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपने, तो आप ये कहिए कि सर वो ले लो, उसका जहां यूज करो उन्हें क्या पता चलेगा, हो सकता है क्वेश्चन। नहीं वो भी ठीक है, लेकिन ये भी हो सकता है ना कि अगर हम चोरी छिपे कर भी लें तो किसी को क्या पता चलेगा, राइट? बट द थिंग इज कि जब आप सिविल न्यूक्लियर के लिए जब न्यूक्लियर यूज करते हैं ना, तो उसकी एनरिचमेंट पे फर्क पड़ता है। व्हेन यू यूज अ न्यूक्लियर एनर्जी टू डेवलप इन डिफेंस बॉम्ब ना, तो दैट शुड बी 80 to 90% एनरिचमेंट ऑफ द यूरेनियम शुड बी यूज्ड। और जब आप सिविल में यूज करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक जनरेशन, तो उसमें एनरिचमेंट 30 से 40% ही होता है। तो जब आप सिविल न्यूक्लियर डील कर रहे हो तो आपको यूरेनियम, थोरियम जो मिलेगी वो उसकी एनरिचमेंट ही 30% होगी, आप उसको डिफेंस में यूज ही नहीं कर सकते। जैसे एग्रीमेंट कोई ऐसा हो कि उसने कर लिया, आर गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो, राइट? सो इंडिया इज ऑल्सो डेवलपिंग इट्स ओन टेक्नोलॉजी टू ऑफ थोरियम, थोरियम भी इंडिया अपना है बना रहा है, हार्ड वाटर, ये सब आप साइंस में पढ़ेंगे दिस ऑल। जब आप न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन पढ़ेंगे ना, तो यू विल स्टडी इन डिटेल थोरियम, यूरेनियम, ये सब पढ़ना है आपको, आई मीन इन दिस साइंस एंड यूरेनियम तो नहीं, थोरियम है,
हाँ, और हम उसी को, लेकिन वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन इट इज अ हाई कॉस्ट। ठीक है, चलिए। केरला में मोनोजाइट और ये सब, मोनोजाइट उससे हम बना रहे हैं, लेकिन वो क्या है ना, थोड़ा सा कॉस्टली प्रोसेस है। सो इंडिया एंड जापान signed a nuclear energy cooperation or nuclear cooperation deal, signed a civil nuclear cooperation deal, civil nuclear cooperation deal. Now write down the key points related to this. Under the civil nuclear, so Japan can supply nuclear reactor fuel and technology to India. So under this agreement, what has been agreed, that Japan will supply nuclear reactor fuel and technology to India. Next, India can purchase new generation of nuclear reactors, can purchase new generation of nuclear reactors with over 1000 megawatt capacity. New generation of nuclear reactor with over 1000 megawatt MW capacity with high-tech features. Safety features. Next, India will get state-of-art nuclear fuel fabrication. India will get state-of-art fuel fabrication and breeder technology from Japan. And breeder technology. India will get state-of-art nuclear fuel fabrication and breeder technology from Japan. Breeder, B-R-E-E-D-E-R, breeder. Sorry, fuel fabrication, nuclear fuel fabrication is a technology. इतना तो मुझे बस, that you will study in this. So it is basically a technology related to the this. Next point, ब्रीडर क्या होता है? स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब क्या हो गया? आप ये तीनों अलग नहीं है। स्टेट ऑफ आर्ट न्यूक्लियर फ्यूल मीन्स टेक्नोलॉजी जो उनके पास न्यूक्लियर फ्यूल को यूज करने का है, जो न्यूक्लियर ब्रीड करने का है, बनाने का है, वो टेक्नोलॉजी देंगे इंडिया को। ब्रीडर क्या होती है? व्हाट इज ब्रीडर? यस, इनहैंस करने के लिए। तो ब्रीडर का काम क्या होता है? ब्रीड करना। ब्रीड मीन्स यस, बढ़ाना, राइट, इनहैंस करना। तो आप कैसे यूज करोगे? तो हम टेक्नोलॉजी बताएंगे कि आपको जो हम न्यूक्लियर दे रहे हैं उसका एनरिचमेंट आप और बढ़ाएं। आगे डिटेल आप फिर पढ़ना ही पड़ेगा। Next, write down the next, the bilateral treaties and agreement. Bilateral treaties and agreement. India and Japan
have agreed on, India and Japan has agreed on transfer of defense equipments and technology in 2015. Agreed on transfer of defense equipment and technology in 2015. Technology. And also agreed on security measures for the protection of, and also agreed on security measures for the protection of classified military information. Protection of classified military informations. Classified means which should not be disclosed, secret से बोलते हैं. Next, India and Japan agreed for cooperation in peaceful use of nuclear energy in 2017. India and Japan agreed on cooperations in peaceful use of nuclear energy in 2017. Use of nuclear energy 2017. ठीक है? So these are the agreement, right? Now write down this. Why importance of Japan for India. So first sub point, economic and commercial relations. India and Japan signed and implemented. India and Japan signed and implemented. Implemented. India Japan SEPA. India Japan and SEPA is Comprehensive Economic Partnership Agreement in 2011. Economic Partnership Agreement in 2011. Next, Japan was 12th largest trading partner for India. Japan 12th largest trading partner for India. ठीक है? So this is economic and commercial relation, it is important. ठीक है? Next, second is official development assistance, ODA. Officials Development Assistance, ODA. India is the largest recipient of Japanese ODA. India is the largest recipient of Japanese ODA for the priority areas like power,
power, transportations, environmental project, and project related to basic human needs, right? और आप लिख सकते हैं in the note or anything that Delhi metro is a successful example of Japan cooperations. Delhi metro is a successful example of Japanese cooperations through ODA. ठीक है, और ये ODA is a new, earlier it was known as an overseas assistant development. जब इंडिया ने जापान ने जब इंडिया को ODA दिया था, that time it was known as an overseas. ठीक है ना, overseas assistant development, ODA, overseas development assistance. Clear? So this is the second. Third point, write down. Development of India's northeast. Sorry, हाँ, we are writing why Japan is significant importance ना, तो आपने दो लिखा है, एक इकोनॉमिक और एक ऑफिशियल ODA. Now next is development of India's northeast. So Japan is the only northeast. Japan is the only country with whom India has actively Japan is the only country whom India has actively invited to help in socio-economic development in northeast of India. Socio-economic development in northeast India. Next point, under the same heading, India and Japan Act East Forum and India and Japan Act East Forum held in 2022 for the 6th time and focused on connectivity project in northeast India. ठीक है, and now write down the next subheading, defense partnership. So defense and strategic partnership between India and Japan. Defense and strategic partnership between India and Japan forms an integral part of bilateral ties. Forms an integral part of bilateral ties. ठीक है, next point, bilateral defense cooperation is facilitated by bilateral defense cooperations is facilitated by India
जापान 2+2 डायलॉग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अंडर द सेम सब हेडिंग डिफेंस, जापान ज्वाइंड मालाबार एक्सरसाइज एज अ परमानेंट मेंबर इन 2015। जापान ज्वाइंड मालाबार एक्सरसाइज as a permanent member in 2015. Clear? Now next subheading under the significance importance of Japan, shared concern about China. So concern of China is a key driver of relations between India and Japan. Key driver of India and Japan relations. पूरे देश में, दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो, चाइना उसकी बात हो ही रही है। आप बताइए, नहीं आप बताओ। यस, चाइना कैसे कंसर्न है इन दोनों के रिलेशंस के बीच में, बताइए। Why there is a concern? Why there is a talk of China, not an US or Russia? क्या नियरेस्ट? जापान के नियरेस्ट कौन है? दिस इज जापान। तो इन दोनों के बीच में इंडिया आ कहां से रहा है? दिस इज जापान। यस और नो? ये देखिए छोटा सा पोर्शन जो है, बिकॉज ऑफ चाइनाज BRI इनिशिएटिव पॉलिसी। कब, जब से तब से एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं, हर पार्ट में एक ही चीज डिस्कशन हो रहा है। इंडो पैसिफिक रीजन सिर्फ चाइना की वजह से डिस्टर्ब चल रहा है। तो ओ अच्छा, ऐसी बात है। सब 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 यही चल रहा है। चाइना को कैसे काउंटर है? चाइना इज ट्राइंग टू एस्टैब्लिश इट्स हेजेमनी थ्रू द कंट्रोलिंग द ट्रेड रूट। मेजर ट्रेड रूट है इंडो पैसिफिक। हमने जब मालदीव किया था तब भी देखा था, अफगानिस्तान किया तब भी देखा, बांग्लादेश किया तब भी देखा, श्रीलंका किया तब भी देखा, अभी भी ये चलता ही रहेगा। So next point, India has a long unsettled border with China. India has long unsettled border with China, and Japan facing pressure from China, and Japan facing pressure from China in East China Sea. In East China Sea. Next point. Under the same, we are writing under the concerns, right? The next point. India, Japan and Australia launched, inverted comma में लिखिएगा, India, not this, what, next point. India, Japan and Australia launched, write in inverted comma, supply chain resilience initiative. Supply chain resilience initiative, RESILIENCE, in 2021. Chain, 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 supply chain resilience initiatives.
SCRI in 2021 to reduce the dominance of China in the Indo-Pacific region. आगे वही बात, to reduce the dominance of China in the Indo-Pacific region. अभी जो बता रहा था भाई, ये लिखने बात करता, अच्छा ओके ओके ओके, it's clear. Now next subheading under the importance, maritime cooperation. Everything या हमें चाइना पर डिपेंड नहीं होना पड़े, हम आपस में सब कर लें. बेसिकली क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम. ठीक, मैरीटाइम कोऑपरेशंस. So India and Japan are strategically aligned in the Indo-Pacific. Are strategically aligned. ALIGNED. In the Indo-Pacific. So they expanded their cooperations in multilateral organizations. So they expanded their cooperations in multilateral organizations like Quad. और क्वाड का फुल फॉर्म क्या है? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. क्वाड फुल फॉर्म इज क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग. क्या हो गया? मल्टीलैटरल organizations like Quad, QUAD, that is known as a quadrilateral security dialogue. Next point, Japan plans to integrate Northeast India with rest of Southeast Asia. Under a plan of inverted comma free and open Indo-Pacific. Connectivity, free and open Indo-Pacific connectivity, including Bhutan, Nepal and Bangladesh. Bhutan, Nepal and Bangladesh. ठीक है. चाइना का थ्रेट काउंटर करने में हेल्प मिलेगी. ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट को कनेक्टिविटी हम कर पाएंगे. बिल्कुल कंसर्न है हमारा, प्रॉब्लम सॉल्व होगा हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का भी जब हम नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जापान के साथ हम नॉर्थ ईस्ट कोलैबोरेशंस में जा ही रहे, क्योंकि फ्रॉम चाइना वी आर मोस्ट थ्रेटेंड टू द नॉर्थ ईस्ट. वो करना ही चाह रहा हमारा वो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ना, उस पर अटैक. हम नॉर्थ ईस्ट को सिक्योर तो करना चाहेंगे, यस और नो? ये तो मेन लैंड से फिर कट जाएगा, इसीलिए. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. So this is maritime cooperations, right? Now next, right now the cultural relations.
एंड व्हाई देयर इज अ कल्चरल रिलेशंस? बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. एक ही रीजन है दोनों के बीच में कल्चरल रिलेशंस या टाइज का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म. ठीक है, तो यू कैन राइट डाउन दैट इंडिया एंड जापान हैड अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल ties. India and Japan had a strong cultural ties due to the spread of Buddhism through East India. Due to the spread of Buddhism in East Asia, through East Asia. ठीक है, कलिंगा वॉर के बाद से बुद्धिज्म स्प्रेड होने की बात हुई थी. तो अशोका के जो एक बेटा एक बेटी, दे वेंट टू श्रीलंका, श्रीलंका से दे वेंट टू द साउथ ईस्ट एशिया, सिंगापुर इंडोनेशिया होते हुए दे वेंट टू जापान टू स्प्रेड द बुद्धिज्म. yes 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 it is. In which university? Calcutta. Okay. Aya. So Aya was Aya in India. In a cultural religious, yes. Yes, yes, yes. तो जापान इज अ वेरी, देखिए दो ऐसे नेशन है ना वर्ल्ड में जो बिकॉज ऑफ देयर एग्जिस्टेंस दे आर सुपर पावर. जापान एंड इजराइल. जापान एक ऐसी देश है जिसके पूरे साल में अर्थक्वेक और सुनामी उनके यहाँ का कल्चर है. आई मीन कल्चरल आता ही रहता है. पैसे वो लाई भी ऐसी जगह कर रहे हैं पैसिफिक ओशन में कि जहां पर ये चीजें होती रहेंगी. रिंग ऑफ फायर के बहुत करीब में है ये. यू विल वॉल्केनिक, आप जब ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो रिंग ऑफ फायर आप पढ़ेंगे. हाँ, तो बहुत करीब में है. तो ये प्रोन एरिया है आपका नेचुरल ऑकरेंस का, लेकिन फिर भी वो बहुत जल्द अपना, दे हैव डेवलप्ड दैट काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी. तो कल्चर ऐसे अमेरिका में 16 साल के बाद बच्चे अपने अलग रह सकते हैं माँ बाप से, एंड दे कैन बी, तो छोड़ दिया जाता है बच्चों को. इंडिया में नहीं होता, नहीं वहां पे कोई भी नहीं. स्कूल में हाँ वो सब करते हैं, वो उनके डिसिप्लिन में है, इन द डिसिप्लिन. अभी हमारे यहाँ किसी बच्चों से स्कूल सफाई कराने लगे तो पेरेंट्स आके झगड़ने लगेंगे कि मेरा बच्चा सफाई करेगा, बिकॉज दिस इज जस्ट टू इनकलकेट अ डिसिप्लिन इन द स्टूडेंट्स और इंडिविजुअल. ठीक है, हम बोलते हैं ना कि सफाई करो सफाई करो, देश में सफाई होनी चाहिए, हमसे बोलते हैं. वी नेवर प्रैक्टिस ना, क्योंकि हमारे हैबिट में ही नहीं है. अनकॉन्शियसली हम वो काम, हम जब बॉटल को डस्टबिन में कब फेंकते हैं? जब हम कॉन्शियस में होते हैं. अनकॉन्शियसली हम कहीं भी फेंक देते हैं, बिकॉज दैट इज अ बैक ऑफ इन आवर माइंड कि हमें वो करना है. वो हो रहा है हैबिट में ही हमारे. रैपर चिप्स का है, रैपर कहीं भी, जब हम कॉन्शियस में आएंगे, अच्छा डस्टबिन, चाय पिया कहीं भी कप, होता है या नहीं? लेकिन कॉन्शियसली फिर हम वो करते हैं. सो देयर इन देयर चाइल्ड देयर इज अनकॉन्शियसली डेवलप्ड है वो चाइल्डहुड से ही. ये चीजों पे आपको ध्यान रखनी है, खुद से करना है. इसलिए ठीक, चलिए. So culturally, because of Buddhism, they are India and Japan is related, right? Now write down miscellaneous under this importance. Extra miscellaneous, बोलिए क्या? Miscellaneous. So India and Japan have a digital partnership agreement or cooperations.
Under miscellaneous, we are writing what are the other areas. So India and Japan has a digital partnership cooperations, disaster risk reduction cooperations, disaster risk. India and Japan has a digital partnership, comma, disaster risk reduction cooperation, comma, skill development cooperations, risk reductions. थोड़ा फास्ट लिखिए, कॉमा, स्किल डेवलपमेंट, कॉमा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशंस, सिस्टर स्टेट एंड सिस्टर सिटी कोऑपरेशंस. हाँ, सिस्टर बहन, सिस्टर स्टेट एंड सिस्टर सिटी कॉर्पोरेशंस वाले कौन सी बात है? तो सिस्टर सिटी कॉर्पोरेशंस में कौन सा कॉर्पोरेशन है? टोक्यो एंड वाराणसी. सिस्टर सिटी कॉर्पोरेशन उनको हेल्प करेगा. मींस अंडर दिस स्कीम वन सिटी ऑफ जापान विल हेल्प अनदर सिटी ऑफ इंडिया इन डेवलपमेंट, क्लीनिनेस में और एवरीथिंग टेक्नोलॉजी में. तो दैट इज नोन एज सिस्टर सिटी. और सिस्टर स्टेट में प्रोविंस टू प्रोविंस. क्लियर? ठीक है. बहुत सारे स्कीम्स उसमें हैं दैट यू विल सी. सॉरी, ठीक है. राइट डाउन द चैलेंजेस बिटवीन इंडिया एंड जापान रिलेशंस. Challenges. First challenge, untapped economic potential. Untapped means unused. Untapped economic potential. Economic potential. Second, disagreement over Russia and Ukraine war or Russia invasion of Ukraine. Disagreement over Russia-Ukraine war. Japan takes tough measures against Russia. Takes tough measures like sanctioning against Russia, like sanctioning Russian entities, sanctioning Russian entities, and India argued for a return to diplomacy to resolve the conflict, means dialogue. And India argued for return to diplomacy to resolve the conflict. यस. इंडिया कहना है कि सैंक्शन नहीं लगाते हैं, आप लोग आपस में बात करके सुलझा लो. जापान ने क्या किया है? सैंक्शन लगाया है. राइट. सो हाँ, इज अ पार्ट ऑफ नेटो, पार्ट ऑफ वेस्ट, तो करना ही पड़ेगा. नहीं. सो क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. डिले. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर डिले. Launched in 2017 in the alternative of BRI corridor. Launched in 2017, alternative of BRI corridor, broad
Belt Road Initiative, but there is no concrete achievement yet. ठीक है, it's clear. So these are the challenges between India and Japan. Now write down the conclusion, way forward. Then Japan will be over. No, I mean this topic will be over. जापान तो रहेगा ही. First, examine SEPA to increase utilizations. CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement, आपने लिखा है अभी, राइट. एक चैलेंज ये भी है ना कि दोनों ने अपने इकोनॉमिक पोटेंशियल को अभी तक उससे बिलो ट्रेड कर रहे हैं, तो सेपा को इंक्रीज करके हम उस पोटेंशियल को एनहांस करें और भी ज्यादा ट्रेड कर सकें. इनहांस सेपा. नेक्स्ट, इंक्रीज यूटिलाइजेशंस. सीईपीए, सीईपी अभी आपने लिखा है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. सेकंड, utilizations, increase utilizations. Next point, overcoming non-tariff barrier. The emphasis should be on improving cooperations. The emphasis should be on improving cooperations with relevant Japanese agency. Emphasis should be on improving cooperation with relevant Japanese agency and empowering export industry. Japanese agency and empowering the export industry. एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इंडस्ट्री. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर should be revised and make it more attractive and beneficial. Should be revised and make it more attractive and beneficial. Revise and make it more attractive and beneficial. वही BRI का जो अल्टरनेटिव है उसी की बात, जो अभी रुकी हुई है किसी उस पे काम, मतलब इट्स अ गुड इनिशिएटिव बट स्टिल देयर इज नो इम्प्रूवमेंट. तो उसको भी और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे तो रिलेशंस और भी अच्छा होगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट को भी इजीली हम कनेक्ट कर सकेंगे. ठीक है. दिस इज इंडिया एंड जापान. नेक्स्ट इज लेट्स मूव टू द ऑस्ट्रेलिया. इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. BRI का ऑल्टरनेटिव है ये. इट इज आपने अभी लिखा है ना, रिलेटेड टू एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर. इट इज एन 2017 और इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू BRI. BRI इज बेल्ट रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. हाँ, जापान और एशिया को, जापान का प्रोजेक्ट है ये, एशिया और अफ्रीका को कनेक्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर ये जल्दी रिवैम्प होगा तो इट विल बी हेल्प, राइट. तो दिस इज ऑस्ट्रेलिया. ये क्या आ गया? ऑस्ट्रेलिया. क्लियर? सॉरी, हाँ वो बारिश का मौसम है ना. ये देखिए ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, पैसिफिक में सदर्न हेमिस्फीयर। कैन, हाँ, न्यूजीलैंड यहाँ है आपका, ऑस्ट्रेलिया ये है, दिस इज इंडो पैसिफिक रीजन और दिस इज इंडिया। अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी सीन द इंडो पैसिफिक रीजन, दिस इज इंडो पैसिफिक रीजन। ऑस्ट्रेलिया, जापान सब इसी रीजन में है, तो बिकॉज ऑफ दिस ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। And relations with Australia was started in 1962, which was upgraded, and the relations 1962 में जो यूज हुई थी वो that was consulate relations, ठीक है। Then it was upgraded to ambassador level at 1973, फिर ambassador मिलेंगे, पहले consulate ऑफिस, ठीक है। बाकी आपको ज्योग्राफी में you will come to स्टडी अबाउट द ऑस्ट्रेलिया, हमें इनके रिलेशन से मतलब है, बाकी डोंट हैव टू एनीथिंग। दिस इज ऑस्ट्रेलिया, इसके जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है दैट इज ऑन ईस्टर्न, वेस्टर्न इज डेजर्ट, ठीक है। जो आपका वेस्टर्न, दिस इज वेस्टर्न डेजर्ट, देखिए कितना खाली है, तभी तो वो कंगारू इनको कहा जाता है। is very much been this one, ठीक है। this is Great Barrier Reef, largest reef, Great Barrier Reef, तस्मानिया, और here is Tasmania at the lower level, तस्मानिया मैं आपको दिखा रहा हूं, तस्मानिया जो दिख रहा है ना आपको, छोटा सा ये तस्मानिया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है that वो बास स्ट्रेट इज बिटवीन विच ऑफ द कंट्री, तो तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए लिखते हैं। ये भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, लेकिन होपफुली आज हो जाए, राइट। आप बताइए। नहीं, अब इसके बाद हम वेस्ट एशिया करेंगे, वेस्ट एशिया आप ग्रुपिंग्स में करेंगे, वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया का रिलेशंस कैसा है किन किन देशों के साथ, तो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान, इजराइल हम कर चुके हैं, इजिप्ट हो गया आपका, ठीक है, इराक, ईरान, ईरान के साथ भी हम बहुत सारा कर चुके हैं, चाबार पोर्ट एंड ऑल दिस। फिर हम करेंगे साउथ ईस्ट एशिया, वो भी छोटा सा पार्ट है, ठीक, किया खत्म। दिस इज ओह सेंट्रल एशिया, ओह दिस इज सेंट्रल एशिया। ये एशिया का पार्ट तो सेंट्रल तब होगा जब ये एशिया कंटिनेंट में होगा, दिस इज इन ओशियानिक कंटिनेंट, ये एक अलग कंटिनेंट ही है, ओशियानिक कंटिनेंट में है ना, ये सदर्न हेमिस्फीयर में है आपका ये। So this is not part of ये this क्या बोलते हैं, एशिया, 7 कंटिनेंट है ना हमारे यहाँ, yes? So this is one of the continent, एक से, अच्छा, वाह वाह क्या बात है, वेरी गुड। कैसे, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अच्छा कहीं तो एक्सेप्शन होगा ना, गुड। मिडिल ईस्ट नहीं, अरे मैडम देखिए, तो इधर तो बता, तो ना ये ओशियानिक है, बिल्कुल अलग है ये। अब इसमें एक मिनट रुकिए, तो अब देखने दीजिए, मैरीटाइम नेबर में आ सकता है, उसमें नहीं है, अफ्रीका में तो होगा, यूरोपियन यूनियन एक्सटेंडेड नेबर में होगा फिर,
तब मुझे नहीं पता फिर कहाँ पर है मैडम, इसमें अब कहाँ दिया मैं कैसे बताऊं, इनका अपना है ना। ये तो दिखा तो इसलिए रहा है क्योंकि वो इंडिया लोकेस्ट पॉलिसी में है ना। देखिए तो एशिया पैसिफिक इंक्लूड इंडिया न्यूजीलैंड, पैसिफिक ना, एशिया इंडो पैसिफिक में है ये। दिस इज नॉट बिलोंग टू द एशिया, दिस साउथ ईस्ट एशिया, मैं ये कह रहा हूं आपको। एशिया का ये, दिस इज एशिया, दिस इज एशिया, ठीक है, दिस इज ओशियानिक, बिल्कुल अलग, कहीं तो दिया होना ही चाहिए। चलिए लिखिए। राइट डाउन, राइट, जल्दी लिखिए। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, so a bilateral consular relations between India and Australia established in 1962. A bilateral consular relations between India and Australia established in 1962. Which was upgraded to ambassador level in 1973. In 1973. Next point. In 2010, a bilateral relation raised to level of strategic partnership. In 2010, the bilateral ties raised to the level of strategic partnership. Next point. In 2011, the two sides signed a civil nuclear energy cooperation agreement. The two sides in 2011, two sides means India and Australia, signed a civil nuclear energy cooperation agreement. Signed a civil nuclear energy cooperation agreement. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट. In 2015, the bilateral relations was upgraded to special strategic partnership and established in 2015, upgraded to special strategic partnership and established a 2+2 consultations mechanism or 2+2 diplomacy. So it is you are in a position to understand 2+2 means डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हर साल होती रहेगी, तो इनके बीच में भी रिलेशंस ये है, राइट. नाउ यू विल ऑल्सो कम टू नो, और यू आई थिंक यू माइट बी नोइंग और नॉट, ऑस्ट्रेलिया इज प्लानिंग टू मेक पंजाबी एज इट्स सेकेंड लैंग्वेज, एज अ नेशनल लैंग्वेज. ठीक है, कर रहा है ऐसा, नहीं लिखना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ दैट ऑस्ट्रेलिया इज प्लानिंग टू मेक पंजाबी एज इट्स सेकेंड लैंग्वेज, सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज. अब वहाँ से आपको पंजाबी भी सीखनी पड़ेगी. नेक्स्ट पॉइंट.
हाँ, बिजनेस कम्युनिटी, वहाँ का जितना भी ऑस्ट्रेलिया का बिजनेस है ना, स्मॉल टू लार्ज, दैट इज बिन मोस्टली हेल्ड बाय पंजाबीज। तो उनके साथ डील करने के लिए लोगों को पंजाबी आनी चाहिए, या तो पंजाबी को इंग्लिश, या और ऑस्ट्रेलियन जो उनका लैंग्वेज है, और इधर दे कैन लर्न पंजाबी। नेक्स्ट, पोर्ट इंडिया कैंडिडेचर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। Australia support India's candidature in UN Security Council। मतलब वो चाह रहा है कि इंडिया जो है वो बन जाए परमानेंट मेंबर। चाइना के बाद सिर्फ अपोज चाइना ही कर रहा है, इसलिए नहीं बन रहा है। चाइना को पता अगर इंडिया बन गया तो इट विल बी नॉट बी बेनिफिशियल टू चाइना ना, फिर वो पाकिस्तान को, इंडिया बनते ही पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस और करेगा, तो दैट विल हैम्पर द चाइना। ठीक है, चलिए, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, नाउ वी आर राइटिंग related to current relations between all this, right? So India and Australia discussed finalization of a comprehensive trade deal and a migration pact and also a defense cooperations. Next point, both nations signed MOU for cooperation in sports. Both nations signed MOU for cooperation in sports and and audio visual co-production. ठीक है, मतलब टीवी रेडियो में प्रोडक्शंस, यहाँ के प्रोग्राम वहां भी चलेंगे। नेक्स्ट, both nations exchange term of reference for India Australia Solar Task Force. Both nations exchange term of reference for India Australia Solar Task Force. Australia Solar Task Force, comma, टर्म रेफरेंस का मतलब क्या होता है? टर्म मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स, ये टर्म एंड कंडीशंस है सोलर रिलेटेड। टर्म ऑफ रेफरेंस मीन्स वी शुड रेफर टू दैट, कंसिडर्ड और एग्रीड ऑन दैट टर्म्स। नेक्स्ट पॉइंट, बोथ नेशन हैव साइंड लेटर ऑफ इंटेंट बिटवीन अटल इनोवेशन मिशन, intent, letter of intent, INTENT, letter of intent between Atal Innovation Mission AIM और अटल इनोवेशन मिशन को हैंडल कौन करता है? इट्स कमांडर BRO। व्हाट इज BRO? अच्छा, बॉर्डर रोड और नहीं, NHRI। अटल इनोवेशन मिशन है क्या, पहले ये बताइए तो। आत्मनिर्भर, व्हाट डू यू मीन बाय अटल? व्हाट डू यू मीन बाय अटल? अटल बिहारी वाजपेयी। इनोवेशन, स्टार्टअप, ये नीति आयोग का प्रोजेक्ट है अटल इनोवेशन मिशन।
Atal Innovation, between Atal Innovation Mission and Commonwealth Scientific and Industrial Research Organizations. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organizations. Scientific and Industrial Research Organizations. ठीक है. Now next लिखिए. Now we are writing cooperation between India and Australia. First point is trade and economic relations. Trade and economic relations between India and Australia. So India is Australia's 9th largest trading partner. India is Australia's 9th largest trading partner, and Australia is India's 17th largest trading partner. 17th, 17th. Australia's ninth largest trading partner, and Australia is India's 17th largest trading partner. ठीक है. Next. इस under this write one or two point more. So Australia, India, no, not India export to Australia's, India export to Australia products like refined petroleum, jewelry, refined petroleum, refined क्रूड ऑयल हम लेकर के रिफाइन करते हैं, उसके बाद उनको हम देते हैं. तो रिफाइंड पेट्रोलियम, ज्वेलरी, पर्ल्स एंड जेम्स. वो जेम्स खाने वाला जेम्स नहीं, दैट मोती एंड ऑल दिस. पर्ल्स एंड जेम्स. फिनिश्ड टेक्सटाइल आर्टिकल्स, finished textile article. Right? And India import from Australia like coal, and India import from Australia like coal, copper ore, coal, copper ore, natural gas, clear? So this what India import from the Australia. Under the same trade and economic, write down next point that in 2022 India and Australia signed economic cooperations and trade agreement. In 2022 India and Australia signed economic cooperation and trade agreement which provide duty free access to huge number of goods. Which provides
duty free access to huge number of goods and promote trade in services. ठीक है, is it clear? So this is first relation, trade and economics. Second is regional and multilateral cooperation. Multilateral cooperations. So both are member of G20, Commonwealth, ASEAN Regional Forum, G20, Commonwealth, ASEAN Regional Forum. They are member of G20, member of Commonwealth, right? Member of ASEAN Regional Forum. Next point, Australia support India's candidature in expanded UN Security Council. India's candidature in expanded UN Security Council. ठीक है. Next, under the same point, under multilateral cooperations, that Australia support India's membership to APEC and NSG. APEC, APEC, Asia Pacific Economic Cooperations, and NSG, Nuclear Supplier Group. Australia support. अब टाइम नहीं है स्लो का. नाउ वी हैव टू 6th गियर में गाड़ी डालनी पड़ेगी. ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट, यस, ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट इंडियाज कैंडिडेचर और मेंबरशिप in APEC, APEC capital. APEC means Asia Pacific Economic Cooperations, and NSG, NSG means Nuclear Supplier Group. ठीक है. So this is multilateral. Now write down the third, APEC. APEC, APEC. APEC का फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशंस. एनएसजी का फुल फॉर्म है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट अंडर रिलेशंस, डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिलेशंस. एंड सिक्योरिटी, defense and security relations. A bilateral relations was upgraded to bilateral relations. लिखिए. मैं जब बोलता हूं तब आप लोग लिखते नहीं है. जब मैं चुप हो जाता फिर अच्छा सर क्या बोले सर. A bilateral relations upgraded to comprehensive strategic partnership in 2020. Comprehensive strategic partnership in 2020. Next point, both country concluded mutual logistic support agreement, MLSA. Mutual logistic support agreement, mutual logistic support agreement in 2020, and 2+2 dialogue in 2021. ठीक है. नेक्स्ट,
India, Australia participate in military exercise like Malabar exercise. Like Malabar exercise, MALABAR, ठीक है, कॉमा ऑज इंडेक्स, ऑज इंडेक्स, ऑस्ट्रेलिया इंडिया exchange. This is a military exercise between India and Australia. Malabar Oz Index. And military to military exchange, military to military exchange, and military to military exchange, and defense, commerce and technological cooperations. Commerce and technological cooperations. ठीक है, is it clear? Next लिखिए. India has been invited to join the Talisma Sabre exercise in 2023. India has been invited to join Talisma, 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 Talisma Sabre exercise, SABRE 23. Clear? It is also a kind of military exercise conducted by Australia. So India was asked to join. क्या है देखिए, what is this? क्या है, what is Talisma Sabre exercise? It's clear. So this is a defense and securities cooperation between India and Australia. So the area, now write down challenges between India and Australia relations, or challenges in India Australia relations. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच का रिलेशंस का? नहीं, हर जगह चाइना नहीं आएगा. इंडियन डायस्पोरा, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन डायस्पोरा के ऊपर अटैक बहुत होता है. रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस हमेशा, अक्सर इंडियन, तो दिस इज अ मेजर चैलेंज बिटवीन द बोथ रिलेशंस. मेजर क्या? ये मुझे नहीं पता. ऑस्ट्रेलियन जो है वहां के बेसिक इंडियन के ऊपर, वो ठीक है. मतलब मैं अब उतना डिटेल, अब वो आपको देखना पड़ेगा कौन सी ट्राइबल और क्या है, कहाँ रह रही है. तो जो मेजर हैं वो इस पे अटैक करते हैं इंडियन पे ऊपर. तो दिस इज द मेन इशू, डायस्पोरा अटैक. ठीक है, तो फर्स्ट लिखिए, इशू फेस्ड बाय डायस्पोरा. A report of discriminations and racism, a report of discriminations and racism against people of Indian origin in Australia. Discriminations and racism against people of Indian origin in Australia. Next point, I mean next this challenge. Difference in approach towards Indo-Pacific. Different approach towards Indo-Pacific.
So for India, it is entire Indian Ocean. For India, it is a matter of entire Indian Ocean, Bay of Bengal and Arabian Sea. But for Australia, it is a matter of Southwest Indian Ocean. ये है इंडियन ओशन आपका, ये पूरा इंडियन ओशन है ना, दिस वन, ठीक है। तो साउथ वेस्ट ही मैटर करता है। एंड स्ट्रेच ऑफ द साउथ पैसिफिक, स्ट्रेच ऑफ साउथ पैसिफिक, ये पैसिफिक में भी है, दिस इज साउथ पैसिफिक। नेक्स्ट चैलेंज, mismatch capabilities. Australia and Indian naval forces are significantly different capabilities. Significantly differing capabilities, comma, cooperation between shared platform Australian and Indian naval forces have significantly differing capabilities, comma, cooperation between shared platform is difficult. Is difficult in absence of secure communications. In absence of secure communications. ठीक है। And the last challenge is trade deficit. Trade deficit. In financial year 2022, India has a trade deficit of, in financial year 2022, India has a trade deficit of $8.5 billion with Australia. US dollar with Australia. Now why we are writing US dollar? Because Australia has also a currency of as a dollar, which is known as an Australian currency, Australian dollar. तो यहाँ पर हम US डॉलर इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि विच इज 8.5 बिलियन 5 बिलियन 8.5 ट्रेड डेफिसिट विथ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्लियर? क्योंकि उनके पास भी अपना करेंसी डॉलर ही है, ऑस्ट्रेलिया भी डॉलर ही चलाती है, तो वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से नाम है उनका। हमारा इंडियन रुपी है, हमारी अपनी करेंसी है, पाकिस्तान के भी करेंसी को रुपी बोलते हैं, नेपाल के करेंसी को भी रुपी बोलते हैं। तो जब भी उनके साथ ये होगा तो इसमें मेंशन करना होगा, राइट, इंडियन रुपी और नेपाल रुपी, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा अमेरिकन डॉलर, क्योंकि डेफिसिट अमेरिकन डॉलर में है, वहां हम डॉलर में कर रहे हैं, तो दैट इज मोर प्रोमिनेंट। इज इट क्लियर? ठीक है।
Now write down measures or way forward. First, prioritize consultations mechanism. Consultation mechanism. बातचीत की बढ़ाना होगा और ज़्यादा दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स और इंडियन प्राइम मिनिस्टर और उनके यहाँ. हु इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? मैच हुआ था, वो देखने आए थे. हाँ यस, मैं भी भूल गया. हाँ अहमदाबाद में हुआ था ना. हाँ, और वो मैच इंडिया जीत गई थी, हार गई थी? मैच देखते नहीं, मूवी देखते नहीं, फिर हाँ कुछ तो ये है. और ऑस्ट्रेलिया फॉलो विच टाइप ऑफ पॉलिसी? इट इज अ रिपब्लिकन डेमोक्रेसी. यस, इट्स अ मोनार्कियल, कनाडा की तरह. वहां पर इंग्लैंड, अब तो किंग नॉट क्वीन. हाँ तो वो किंग है. नहीं तो हम भी है, लेकिन हम तो नहीं मानते. क्लियर? सो प्रायोरिटाइज. नेक्स्ट इज डिपेंड इन टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशंस. डिपेंड, DEEPEN. नेक्स्ट नहीं, अब नहीं लिखना है, कह रहे नहीं. DEEPN, डिपेंड टेक्नोलॉजिकल कॉपरेशंस. टेक्नोलॉजिकल, यस. ठीक है क्या? तो राइट डाउन अंडर दिस. An unexplored opportunity can be explored. An unexplored opportunity can be explored. An unexplored opportunity can be explored with joint development of undersea sensor, radar system, undersea sensor, radar system, armored vehicle, unexplored opportunity can be explored with joint development of undersea sensor, radar system, armored, ARMOURED, armored vehicles, and etc. or many more. Armored, ARMOURED. Next point under the defense cooperations, deepen technological cooperations. More active Australian participations in India defense industry expositions. More active Australian participations in Indian defense industry expositions, like defense industry expositions, like डिफेंस एक्सपोजिशंस. एक्सपो जो होता है डिफेंस अपना शो करती है, उसमें पार्टिसिपेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया करेगी, एयर शो में करेगी, राइट. डिफेंस एक्सपो कॉमा एरो इंडिया शो, राइट. तो इससे क्या होगा, दोनों के बीच में पार्टनरशिप कोलैबोरेशन इंप्रूव होगा, राइट. तो जब भी यहाँ डिफेंस एक्सपो हो
ऑस्ट्रेलिया के भी डिफेंस जितने आर्मर्ड और व्हीकल्स वो सब आकर इंडिया में एक्सप्लोर हो, लोग देखें अच्छा दिस इज इंडिया, डिफेंस टाइज बढ़ेगा दोनों के बीच में तो रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड होगा, राइट. सो दीज आर द measures which can be done for the improve the relations, right. Now as we know that Australia is a part of AUKUS, right. So now write down India and AUKUS. Right, and we are mainly writing concern related to India with AUKUS. क्या concern है, इंडिया का क्या नुकसान है with AUKUS. AUKUS कैपिटल में, ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस AUKUS, ठीक है. So first challenge is erosion of India's regional influence. Erosion of India's regional influence. Write down regional influence. So there is a concern of erosion of India's regional influence in Eastern Indian Ocean. There is a concern over erosion of India's regional influence in Eastern Indian Ocean. In Eastern Indian Ocean with the crowding of nuclear attack submarine in future. इस एरिया में सबमरीन बिक जाएगा. With the crowding of nuclear attack submarine in the future. Right, क्योंकि AUKUS has been against the China's hegemony, तो उसको काउंटर करने के लिए. नेक्स्ट, AUKUS leads to increased Chinese aggression. Increased Chinese aggression. राइट, अब यहाँ चाइनीज एग्रेशंस बढ़ेगा तो इट विल अफेक्ट द इंडिया ऑल्सो बॉर्डर, और क्योंकि चाइना कंसिडर AUKUS एज एन अगेंस्ट इट्स थर्ड नेशंस, आपने देखा था, वी हैव सीन, राइट. नेक्स्ट पॉइंट, AUKUS में शिफ्ट बैलेंस ऑफ पावर इनटू इन इंडो पैसिफिक. AUKUS में शिफ्ट बैलेंस ऑफ पावर इन इंडो पैसिफिक. Indo-Pacific region. And now how it is concerned, because AUKUS is, India is not part of AUKUS, और बैलेंस ऑफ पावर अगर यहाँ पर AUKUS के पास होगा तो इंडिया इसका पार्ट है ही नहीं, इंडिया इस पावर से बाहर होगा, इस बैलेंस ऑफ पावर से बाहर होगा. So this is also the concern related to India, right? And the last is on impact on Quad. Impact on Quad. So according to expert, AUKUS dismiss the value and useful of Quad. ठीक है, because two nations which is a part of Quad are a part of AUKUS, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए. तो दोनों का तो सर्व इंटरेस्ट इससे हो जाएगा, तो वो क्वाड में उतना इंटरेस्टेड नहीं होंगे. इज इट क्लियर? So these are the challenges related to, हाँ बोलिए. According to expert, this AUKUS will create this dismiss the value and moral of the Quad, usefulness of Quad. ठीक है, is it clear? So this is India and Australia. Australia relations, I mean not relations, relations भी है अभी,
Now next we will start India, West Asia. So under this India, West Asia, we will see India, Iraq, Iran, sorry, India, Iraq, this is Iraq, then India, Iran, ये चाबार पोर्ट ये सब हम पहले रिलेशंस में देखे हैं, राइट. देन वी विल सी इंडिया, यूएई, कतर, सऊदी, ओमान, बस ज़्यादा है नहीं. रिलेटेड मतलब करंट रिलेटेड. इसमें मेन हमें ये देखना है कि वाई हाउ वेस्ट एशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनेगा वो इंडिविजुअल से नहीं, सो इट विल बी रिलेटेड टू द होल रीजन. सो दिस इज वेस्ट एशिया, आप देख सकते हैं. ईरान इज हियर, चाबार इज समवेयर हियर, देखिए इंडिया इज हियर, ठीक है. So it will gateway to clear. So we'll continue in the next class. So thank you.